Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Learn IELTS with me. So, how are you today? Enjoying your Sunday? Okay, jokes apart. The topic for today is list of headings in reading. In this video, I'll tell you how to attempt list of headings within few minutes. So, let's start. Here you can see there is a reading given which is based upon the story of coffee, right? So let's start with the questions first. Have a look on those questions. Here they are. So first question has been already solved here. Let's start with paragraph B. The first thing you have to do is to read the B paragraph, right? Let's start. The news of this energy laden fruit quickly moved throughout the region. Moved. So you are having the word moved. Moved means shifted, right? Spreaded throughout the region. Coffee berries were transported from this is and see transported and were first cultivated in what today is the country of Yemen. Coffee remained a secret in Arabia before spreading to Turkey and then to European continent by means of Venetian trade merchants. Okay, so we are having three words, right? Moved, Ethiopia, Arabian Peninsula, first cultivated, Yemen, coffee remained. So from here we come to know that they are talking about how coffee is spread throughout these countries, right? Let's find the answer now. Growing coffee, इसकी बात ही नहीं की है. Problems with manufacture, not at all. Processing the bean, बिल्कुल भी नहीं. First contact, ये already solve किया हुआ है. Arabian coffee, बिल्कुल भी नहीं. Coffee varieties, modern coffee, the spread of coffee. So this is the answer, right? वहाँ पे भी स्प्रेडिंग की बात की है, यहाँ पे भी स्प्रेडिंग की बात की है कि कॉफ़ी कैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्प्रेड हुई है, मूव्ड हुई है, राइट? सो 8th इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28. So next is, let's read out the paragraph C. कॉफ़ी वॉज फर्स्ट ईटन एज अ फूड. अब कॉफ़ी के बारे में बताया वो कैसे यूज़ की जाती थी, कैसे खाई जाती थी. दो लेटर पीपल इन अरेबिया वुड मेक अ ड्रिंक आउट ऑफ. अब ईटन की बात भी की है, ड्रिंक की बात भी की है. लेट्स मार्क इट. ईटन, लेटर पीपल, ड्रिंक, बॉइलिंग. उसको बॉयल किया जाता था, ठीक है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी थी. कॉफ़ी फॉर अ टाइम वॉज नोन एज अरेबियन वाइन. उसको वाइन के रूप में भी मुस्लिम्स लेते थे क्योंकि उनकी अल्कोहल बैन थी वहाँ पे. इट वॉज नॉट अंटिल आफ्टर कॉफ़ी हैड बीन ईटन एज अ फूड, a wine and a medicine that it was discovered probably by complete accident in Turkey, that by roasting a bean delicious drink could be made. So eaten की बात भी की है, drink की बात भी की है, wine की बात भी की है. आगे, the roasted beans were first crushed and boiled in water. this the first coffee house के बारे में बताया. So mainly इसकी conclusion क्या निकालते हैं हम? Mainly इसकी conclusion ये है कि कॉफ़ी को कैसे यूज़ किया जाता था. इटन, ड्रिंक, मेडिसिनल वैल्यू और नीचे दिया हुआ है उसका उसको फिर डिलीशियस ड्रिंक में बाय एडिंग अ डैश ऑफ मिल्क, राइट? स्वीटनिंग इट. लेट्स फाइंड आउट दिस. ग्रोइंग कॉफ़ी, नो. प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चर, इसके बारे में भी नहीं बताया, राइट? प्रोसेसिंग द बीन, प्रोसेसिंग के बारे में भी नहीं बात की. फर्स्ट कॉन्टैक्ट, अरेबियन कॉफ़ी वेराइटीज़ के बारे में भी नहीं बात की. मॉडर्न कॉफ़ी के बारे में नहीं कुछ बोला. कंज्यूमिंग कॉफ़ी, उसको खाया जाता था, उसको ड्रिंक किया जाता था एंड एट द एंड उसमें मिल्क ऐड किया गया, कुछ स्वीटनर्स ऐड किए गए. सो हाउ दे कंज्यूम द कॉफ़ी. सो 9th इज़ द आंसर, राइट? लेट्स रीड आउट पैराग्राफ डी. Here it is. If you were to explore the planet for coffee, you would
planet for coffee, you would find about 60 species of coffee plants growing in wild in Africa, Malaysia, and other regions. But only about 10 of them are actually cultivated. Only 10 out of them. Of these 10, two species are responsible for almost all the coffee produced in the world. Coffee Arabica and coffee Canefora, usually known as Robusta. So they have told many varieties of coffee, right? Planet for coffee, उसकी 60 species थी, उसमें से 10 कल्टिवेट हुई, 2 species ये बताई हुई है कौन सी है. ठीक है जी. अब लेट्स फाइंड द आंसर. ग्रोइंग कॉफ़ी बिल्कुल नहीं. प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग द बीन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, अरेबियन कॉफ़ी वैराइटीज़, राइट. क्लाइमेट बिल्कुल नहीं. कॉफ़ी प्लांट नहीं. सो कॉफ़ी वैराइटीज़ के बारे में बताया गया. सो 6 इज़ द आंसर, राइट. नाउ लेट्स रीड आउट ई पैराग्राफ. Although wild plants can reach 10 to 12 meters in height, 12 meters in height, इसकी ग्रोथ के बारे में बताया. The plantation one reaches a height of around 4 meters. This makes the harvest and flowing easier. Cultivation, okay, cultivation के बारे में बताया गया. The flowers are white, उसके look वाइज, उसका कॉफ़ी कैसे दिखती है, उसके flowers कैसे दिखते हैं उसके बारे में बताया. The flowers are white and sweet scented like the Spanish jasmine. Flowers give way to red, this, and the fruit is like a big cherry, both in size, color. The berry is coated with a thin epicarp containing a white sugar, mucilaginous flesh, mesocarp. Inside the pulp there are the seeds in the form of 2 beans. So उसकी looks के बारे में बताया गया. किसकी? Coffee bean की, right? Now percent antograph. When peeled, the real bean appear with another very thin silvery film. The bean is bluish green, verging on bronze, and it is at the most 11 millimeters long and 8 millimeters wide. Let's find out the answer. Growing coffee, not at all. Problems with manufacture, processing the bean, first Arabian coffee, modern coffee नहीं. Climates के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं की है. The coffee plant, because इन ई पैराग्राफ पूरे कॉफ़ी प्लांट को डिस्क्राइब किया गया. कैसा होता है, इनर क्या है, जब पील करते हो तब कैसा है, राइट. सो ई का आंसर है कॉफ़ी प्लांट. क्लियर है. नेक्स्ट इज एफ. लेट्स रीड आउट द एफ पैराग्राफ. Coffee plants need special conditions to give a satisfactory crop. Special conditions. The climate needs to be hot, wet. They are talking about the climate in which coffee grows between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, with the frequent rains and temperatures varying from 15 to 25 degrees Celsius. The soil should, ये तो एक बात हो गई, ठीक है जी, ये हो गई एक बात. भाई उसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, राइट. सो ये तो हो गया हमारा क्लाइमेट. नेक्स्ट बात यहाँ से शुरू होती है. द सॉइल शुड बी डीप सॉइल, हार्ड, permeable, well irrigated with a well drained subsoil. The best lands are the hilly ones from just one. This is the perfect altitude is between this cultivation. यहाँ पे थर्ड चीज़ की बात हुई है, कल्टिवेशन. Aimed at protecting the plants at every stage of growth is needed. Sowing should be in sheltered nurseries, from which after this seedlings should be moved to plantation in a rainy season, where they are actually alternated, shield them from the wind and excessive sunlight. Only when the plant is 5 years old can be counted upon to give a regular yield. This is between 400 grams Arabica beans for each plant, 600 grams and 2 kilos for Robusta beans. Okay, यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हुई है. पहले हुई है स्पेशल कंडीशंस, मीन्स क्लाइमेट कैसा होना चाहिए. सेकंड, सॉइल कैसा होना चाहिए, उसकी लैंड कैसे होनी चाहिए, एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी हाइट पे उसको ग्रो करना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ कल्टीवेशन, उसकी कल्टीवेशन कैसी होनी चाहिए. सो 3 चीज़ों की बात हुई है यहाँ पे, राइट. लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम कंक्लूड करें, व्हेन वी रीच टू द कंक्लूजन
सबसे ज़्यादा बात हुई है इसमें कल्टीवेशन की, हाउ इट इज़ कल्टीवेटेड, राइट. Now let's find out the answer. Growing coffee can be okay. Problems no, processing no, first contact Arabian coffee, modern coffee, climates for coffee, climates, right? Here is climates, not climate for coffee. So वहाँ पे सिर्फ हमें एक climate दिया गया था. The climate needs to be hot, wet or hot temperature. Only climate, but in the question climates for coffee. I know students इसमें बिल्कुल confuse होंगे. Climates. So answer is growing coffee, not the climates for coffee, because in the E paragraph only one climate is mentioned, not the climates for coffee. Is that clear? Moving to the last question, G. Harvesting time depends on the geographic situation and it can vary greatly therefore according to the various producing countries. First, the ripe bean are picked from the branches. Pickers can select at the end day this how coffee is collected, right? Bring the heavy burlap bags to the pulping mill where the cherry coffee can be pulped. The pulp beans, then this is 2 weeks later, sun-dried beans, now called parchment, and scooped up, bagged, silver screen. Roasting, the green beans are roasted according to the customer specifications, and after cooling, the beans are then packaged and mailed to the customers. So finally, इसमें एक ही चीज़ बताई गई है कैसे उस बीन्स को तोड़ा जाता है, कैसे ड्राई किया जाता है, देन सनी डेज में रखा जाता है, देन ड्राई किया जाता है, देन पार्चमेंट, देन स्कूप्ड अप, देन उसकी पैकेजिंग की जाती है, देन अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन उसको रेडी किया जाता है, राइट. नाउ लेट्स फाइंड द आंसर्स. प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चर, प्रॉब्लम्स उसमें बताई नहीं है. प्रोसेसिंग द बीन कैन बी. फर्स्ट कॉन्टैक्ट नो. मॉडर्न कॉफ़ी नो. List we have used already. So answer is how we process the coffee. Answer is third, how we process the coffee. Is that clear? So this is the way how you can solve list of headings in an easy manner within a short span of time, right? So try this method at your home and then tell me that you got answers or not, right? So today this was a topic and try it at home, right? So good day. Thank you.